हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना यूनिट नंबर सेकेंड के आगे के क्वेश्चंस। 10 तक हमने कर लिए थे, अब हम 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, what is a translation cum grammar method? What are its merits and demerits? Or write a note on advantage and limitations of the translation cum grammar method. So translation cum grammar method, this is the method often called the translation method. It is also called as the classical method. It come in India with Britishers. It is oldest method to teach English in India and widely practiced throughout the country. It has no psychological base but has two main philosophical base. They are grammar in the soul of the language. A foreign language can easily be learned through translation. Thus, it is method in which grammar and translation go side by side. So, it is called a grammar translation method. Grammar translation method में मतलब क्या होता है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, जैसे सब्जेक्ट, जैसे हमने पास टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये सब पढ़े। तो ये सब एग्जांपल है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, क्योंकि इसमें किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रूल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और जिसकी वजह से रूल पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ट्रांसलेशन पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यही चीज़ें क्या होती है ग्रामर ट्रांसलेशन में। तो इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी है इसने कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्हें कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत हुई थी। उन्होंने इंडियंस को कैसे इंग्लिश सिखाया, उन्होंने ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से ही इंग्लिश सिखाया। और आजकल भी हमारे जो आप देख रहे हो स्कूल्स में भी इसी तरीके से क्या बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, बोलने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, रूल अच्छे से रटवा देते हैं। सो इसके एडवांटेज और डिमेरिट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। एडवांटेज, इट इज़ द बेस्ट वन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर नोन टू अननोन चिल्ड्रन यूजुअली स्टार्ट लर्निंग ओरिजिनल लैंग्वेज व्हेन अ सफिशिएंट बैकग्राउंड इन their mother tongue is separated. It saves their time, therefore it is economically translation saves a good deal of a time which would otherwise be wasted in remaining and explanation explained by given definition and explanation in the original language. Translation from the original language into the mother tongue enables the learner to develop their vocabulary very rapidly. This is the best way of expanding vocabulary. It is a convenient for the teacher because material aid is not needed. It explains grammatical rule. There is given correct knowledge of English. So सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये नोन टू अननोन जाता है। जैसे कि हम पहले दे देते हैं मोहन खाना खाता है, तो मोहन ईट्स फूड। और मोहन को बोलेंगे मोहन सब्जेक्ट है, खाना वर्ब है, और खाना खाता है। खाता है क्या है, वर्ब है, और खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रिया खेलती है। तो इसमें हमने क्या पहले एग्जांपल दिया, फिर रूल बनाया, तो क्या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहा है या फिर नोन टू अननोन जा रहा है। तो इसमें अच्छी बात है कि एग्जांपल से बच्चा सीख सकता है। और इसमें ये भी अच्छी बात है कि क्या है, इसमें ट्रांसलेशन मेथड, जैसे कि हमें कोई फटाक से इंग्लिश बोले, चाइनीज बोले, हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसे समझेंगे, तो हाँ हमें थोड़ा बेटर समझ आएगा। वाटर का मतलब पानी होता है, मैं पानी पीऊँगा, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर का मतलब क्या होता है, वो पानी पानी होता है। इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें और अच्छी तरीके से वर्ड्स और मीनिंग समझ आती है। और उसके डिमेरिट्स पढ़ते हैं या फिर लिमिटेशंस। It lies emphasis on reading a long speech is negligible. The student are not provide practice in oral work. It does not teach correct pronunciation, intonation, and articulation. The idiom and the phrases in the English language cannot be translated in mother tongue without losing their correct meaning. Translation method attempt to teach English through rule and not by use. It stopped the power of thinking freely. Students first think in their mother tongue and then they translate their ideas in the foreign language. This method is dull and mechanic. The learner is passive receptive of full knowledge. This method is unnatural because it does not help the learner to learn the foreign language as they learn their मदर टंग। सो सबसे इसकी बुरी बात ये है कि क्या है, बच्चों को एक रोबोटिक वे में बना देता है। जैसे कि हम अगर जाते थे, हमारा वर्ब या पास्ट टेंस का जो भी टेस्ट होता था मिनट टेंस का, तो हम क्या बिल्कुल फॉर्मूला रट रट एक एक फॉर्मूला, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हैज बीन, नॉट हैव बीन, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस,
इतने सारे सेंटेंस को अच्छे तरीके से याद करके जाते थे, उनके सारे के सारे रूल्स याद करके जाते थे। तो ये सब क्या करते हैं बच्चों के लिए, अब कोई बोल दो कि एक सेंटेंस लिखो या अपना व्यू बताओ, तो क्या करेगा पहले उसे, फिर उसका रूल ढूंढेगा, फिर उसमें वो सब्जेक्ट लगाएगा, फिर उसके वो करने के बाद भी उसे अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करेगा, मदर टंग में ट्रांसलेट करने के बाद इंग्लिश बोलेगा। तो क्या है, बच्चों पे बैरियर थोप देता है और बच्चों को अच्छे से मतलब एक्सपेंड नहीं हो, खुलने नहीं देता, उन्हें बंद बंद रहने के लिए मजबूर कर देता है। वो अच्छे से बोल ही नहीं पाते जब वो उसी तरीके में उसी वे में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो इसमें सिर्फ लिखने पे काम हो रहा है ना, बोलने पे काम नहीं हो रहा, वर्क पे काम नहीं हो रहा, लैंग्वेज पे काम नहीं हो रहा। इसलिए क्या है, इसका डिमेरिट है। अब इसके लिए कुछ सजेशन दे रखे हैं, जैसे क्लासरूम शुड बी अलाउड, लार्ज क्लासेस शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, रिटन एज वेल एज स्पीक वर्क मच बी गिवन equal to the students. Chorus work, singing, poem, etc. should be done. Word to word translation should be avoided because the structure composition of English and the mother tongue of the pupils will always be different. जैसे कि अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर हद से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वैसे ही टीचर ध्यान नहीं दे पाएगा तो इंग्लिश कैसे सिखाएगा। तो हमें देखना है कि बच्चे में हद से ज़्यादा क्राउडनेस ना हो। और बच्चों को ये नहीं कि सिर्फ लिखना है, उन्हें बोलने का भी काम दिया जाए। उसे डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो और भी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, सिंग कर सकता है। सिंगिंग से क्या हुआ, जो उसके नोटेशन है वो भी क्या ठीक होंगे। और ऐसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटिंग करने जैसे हम पहले सीखते थे, क्या वर्ड मीनिंग होती थी, पहले तो इंग्लिश आता था फिर उसकी हिंदी आती थी। फिर अब कुछ सालों से आ रहा है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, जिसमें हम डायरेक्टली सीख जाते हैं। क्योंकि हम उसमें फिर ट्रांसलेट करेंगे, कहीं ना कहीं मीनिंग चेंज हो जाता है, भले ही एग्जैक्ट ना बता पाए जैसे, लेकिन जो फीलिंग होती है, जैसे कि अगर आपने 10th क्लास में एक नोवेल होती थी ना, एनी फ्रैंक, अगर वो डच लैंग्वेज में पढ़ोगे और इंग्लिश या हिंदी में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उसका जो फीलिंग है, जो पूरा मतलब हम जिसको समझ सकते हैं, जैसे कि हम हिंदी की बातें हमें मतलब कोई हमसे हिंदी में बोलते हैं तो हमें क्या लगता है, ज़्यादा अटैचमेंट लगती है। भाई इंग्लिश में बोले तो हाँ लगेगा ठीक है कोई बात नहीं, हम इधर अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे। तो ये बोले जो फील है उसके लिए इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट होगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। Oral question should be distributed uniformly in the class. Question number 12 है, explain various way and measure used by the presentation and establishment of structure, or what do you understand by structure and the structural pattern. Explain briefly. The structural approach is the recent origin, hence it is called new approach to teach English. It is the result of a far teaching resources of the experts in the field of education. A lot of work has been done in this respect in many English teaching institutes and universities of London and the other states where English has a domain role in a play. About structure approach, some experts have been their opinion as follows. जो हमारी वीडियो है उन्होंने डिफाइन कैसे करा है, it has a scientific study of fundamental structure of English language with analysis and logical arrangement. Shiva Mohan and Mohan Singh has assert that structure or a pattern is made of a word that are arranged in a specific order. There is called a structural approach. Structural approach क्या होता है, जिसमें हम एक specific way में जाने की चीज़ को एक specific चीज़ में कुछ करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझने का स्ट्रक्चर होता क्या है। Seeing the view of above mentioned experts, we can come to the conclusion the structure is the arrangement of a pattern of word. जैसे कि स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, साफ सीधी बात है। We come to the complete the complete iteration. This is complete utterance and the part of the large pattern or structure can also be defined as a tool of a language. मतलब स्ट्रक्चर जैसे मैं पीता पानी, तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं हो ना, मैं पानी पीता हूँ ये स्ट्रक्चर हुआ ना। मैं हूँ पानी पीता, तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ। मैं पानी पीता हूँ तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ। तो अगर इसकी वजह से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, a structure can also be defined as a tool of language. Each language has their own pattern or structure. हर हिंदी है तो उसके अलग स्ट्रक्चर है, स्कॉटिश होगी उसके अलग स्ट्रक्चर है, स्पेनिश है उसकी अलग स्ट्रक्चर है, उसकी अलग पैटर्न है। ठीक है, सबका अलग अलग पैटर्न और स्ट्रक्चर होता है। So in the case with English language, it in this meaningful words are used in a particular or emphasizing some important grammatical point. They are categorized as different from the sentence.
They are having 275 structure in English, okay, which a student should learn to a better common over the language. मतलब जो इंग्लिश है उसके 275 क्या है, स्ट्रक्चर है। अगर किसी स्टूडेंट को हद से ज़्यादा अच्छा बनना है इंग्लिश में तो वो इन सारी चीज़ों को ज़रूर याद रख सकता है। तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आखिर स्ट्रक्चर होते कितने तरीके के हैं। स्ट्रक्चर आर द फोर टाइप। स्ट्रक्चर मेनली चार तरीके के होते हैं। सबसे होता है सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज पैटर्न, फॉर्मूला पैटर्न एंड इडियम्स पैटर्न। सबसे पहले सेंटेंस पैटर्न होता क्या है। इट इज अ मॉडल फॉर सॉरी sentence which will be of the same phase and construction throughout made up of different words। ये ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा फ्रेज होता है जिसमें अलग अलग तरीके के वर्ड यूज करे जाते हैं। ठीक है। परहेप्स क्या होता है। इट्स अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड एक्सप्रेशन इज आइडिया विदाउट इट्स बीइंग अ स्टेटमेंट और क्लू। फॉर एग्जांपल ऑन अ ट्री अबव द वॉल। Formula pattern कहते हैं it's a group of some words which are used on certain occasion and now as a formula such as sorry sir, thank you sir। okay, formula ये सब हो गया। mention not type welcome। idioms कहते हैं they are mainly idioms in English language which are used and taught as a whole। for example go through like। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे हम। राइट डाउन द एम एंड द फीचर ऑफ स्ट्रक्चर मैथड। जो हमारा स्ट्रक्चर मैथड है उसके फीचर्स बताओ, उसके एम बताओ कि उसे सीखना क्या चाहते हैं और उसका उसका जरिया क्या है सीखने का, उसके फीचर्स क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे। राइट डाउन द एम्स एंड द फीचर ऑफ स्ट्रक्चर एंड मेथड। एम्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। Structural pattern has some useful aims. There as follow. It lays a foundation by establishing drill and repeating of 275 grade structure. It enables the structure of it enables the student to achieve master over a required number of words. There are about 3,000 root words which are active use. It correlated grammar and composition with the learning lessons. It also teaches the four fundamental skills of a language learning, namely understanding, speaking, reading, and writing. It lies ample emphasis on arrival of oral approach, active method, and rejection of a formal grammar। इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम। फीचर्स क्या हैं। Feature of structure. This approach has the following characteristic. Structure from the nucleus of English language, hence hence their learning of a paramount importance. Structural structure are based on other words. Each structure has an important grammatical point. They are very careful regard as regard meaning for and from, thus each meaning and each form is the thought at a time. Structure are so graded that each structure should allow one another। क्वेश्चन नंबर 14 है। Write brief about the importance and advantage of a structural method. Merits of the structural method. This approach has the following merits. It can be used as adopted at every stage of teaching. It creates a conductive atmosphere for learning process. It is emphasis. It is given no oral drill and so whatever is learned because becomes stable for a long time in pupil mind. It gives a specific time for pupil activity and practice. It is in this approach boys are given ample opportunity to speak. It is based on specific approach. It also provides ample change to read and write. After reading for 6 or 7 years, ample gets acquaintation with almost 275 basic structure and a vocabulary of 3,000 words. In this approach, a child learns grammar inductively. In this process, the teaching aim are attained properly with a sense of mastery and confidence. Being a systematic process, like it helps such much the syllabus maker and the write textbook। Question number 15 describe in a brief situational approach।
approach situation approach होता क्या है आखिरकार. So the situational approach includes as to how a teacher should create a real situation in the classroom. अब जैसे हमें कोई पोएम पढ़ानी है तो उसमें वो कोई सीनरी दिखाया है, कोई लेख के बारे में बताया, तो हम उस चीज़ को कैसे बच्चों को ऐसे बताएं कि वो इमेजिन कर सके उस चीज़ को. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसे बोलते हैं सिचुएशनल एरर. आपको सिचुएशन लानी है बच्चों के आगे, तो आप कैसे बोलो, कैसे उन्हें दिखाओ, या फिर कैसे अपने वर्ड से उन्हें इमेजिन करवाने में हेल्प कर सकते हो उस सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को. Now the question that arises is how these real situation can be created in the classroom. The situation approach arises to solve this problem. A particular situation helps the teacher to prove practice to the pupil to explain its meaning. A particular situation may be created in the classroom by using the map, picture, various object, action by drawing blackboard. जैसे कि इसके लिए और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों को पिक्चर दिखा सकते हैं, मैप दिखा सकते हैं बहुत सारी, और या तो ब्लैक बोर्ड पे ही ड्रॉ कर सकते हैं हम. ठीक है. इट कैन दस बी रियलाइज दैट टू क्रिएट अ रेलिवेंट सिचुएशन एंड अ पर्टिकुलर problem, this approach tries to teach English with the same manner as the child learn in their mother tongue. इंग्लिश में हम अगर इसे बच्चों को सिखाना चाहें तो उसकी मदर टंग की तरह हम सिखा सकते हैं उसे इंग्लिश में. According to this approach, the English as second language should be taught by forming links between the two words and the real situation, and countered by the child by learning their tongue language. All the items are learned by a child in a real situation. This situation in which the children learns his mother tongue are repeated again and again, and whatever the child understand or express about their this experience of his own life are then in the same way connected with the terminological of English language. The structure or a word conveys its meaning to the pupil only when it is used in a particular situation. This particular situation helps the teacher of familiarizing the pupils with the structure. How a teacher can create a real situation in the classroom? There are various ways of methods through which a teacher can create a real situation in the classroom. This situation may be created in the classroom and outside by the use of objects, by the use of pictures, by drawing or displaying maps and sketches, by gesture and by action. Convention in the another way to create real situation in the classroom. The teacher may ask a question also. This may have discuss on extempores, etc. Main character of situational approach. The main characters are following. New words are introduced identically in the classroom. Opportunities are provided to the pupils to associate the meaning of a new word with create situation. A lot of appropriate material is used to create problem and real situation. Examples are given to make this clear. Teacher gave a continuous statement about this action. He puts before his pupils a question and answer them himself. The use of tongue is emphasized. Question number 16. What do you understand by bilingual method? What are the advantages of this method? It is a method which is recently evolved by Professor C. J. Dawson of Walls. In this method, much importance is given to the another tongue and another mother tongue equivalent are through without duplicating the situation, as it is well known that children learn mother tongue by his own experience or in real life situation. In the same way, he understands from the concept in his own mind. According to Donson, it is a waste of time to recreate the situation while learning a virtual language. This method is indicate a midway between the grammar come translation method and direct method. So grammar translation method है जिसमें आप
पूरी जो स्टेटमेंट है या फिर पूरा जो रूल है वही रटवा दो, डायरेक्ट मतलब रहता है हिंदी का यूज़ ही नहीं होने दो, मतलब हिंदी नहीं, जो भी आपके मदर टंग है उसका यूज़ ही नहीं हो, जो फॉरेन लैंग्वेज हो रही है सिर्फ उसी में ही आपको सीखना है, उसी में बात करना है। तो ये जो CJ डॉन्सन है उन्होंने इनके बीच का तरीका निकाला है, ना इधर की ना उधर की, बट इट रेफर्स फॉर द ट्रांसलेशन कम मैथड इन अ सर्टेन वे। देखते हैं इन a special feature in this method mother tongue is used in the earlier stage of a teaching of explain words and phrases. After this teaching is done without taking help from the another tongue, here word to word translation is not required, hence the use of mother tongue is not so average and in done in the grammar come translation method. A mother tongue is used to explain the subject matter only and not confuse on or any other aspect of language learning. In this method situation are created to use mother tongue to explain English equivalents. Here, the teaching unit it is a sentence of not a word. It's merit. Bilingual method has certain advantage of or merits. Some of them are it give much emphasis on oral work or speech. मतलब ज़्यादा टाइम देगा बोलने पे ध्यान देगा instead of writing. Here no more audio visual are needed. हमें मतलब जिद भी नहीं है कि आप मूवी देखो गाने सुनो इंग्लिश में, ठीक है। इट सेव्स टाइम, हमारा बहुत सारा टाइम बचाएगा, लेबर एंड द एनर्जी ऑफ द टीचर, ठीक है। It does not require special training or teaching training on the part of teacher. It is not suitable for all the types of schools, urban or rural. But this method students have learned more is in a less time in comparison to those boys who are taught to the other method. मतलब इस चीज़ से हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रामेटिकल और डायरेक्ट मेथड के कंपेयर में। Particular what is aim of communicative approach? Communicative approach है उसके aim क्या है, वो चाहता क्या है? The aim of the communicative language is to develop the communicated competition among the learners. ठीक है? Function of communicative language teach are below. Instrumental functions of language is a use language to get things. Regulatory function of language is using language to control the behavior of other. कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, हम जैसे रिएक्ट करेंगे वो वैसे रिएक्ट करेगा, हम जैसे जो बोलेंगे उसी उसी के वे में हमें रिप्लाई देगा, ठीक है। इंटरेक्शन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज यूज लैंग्वेज टू सर्टन इंटरेक्शन विद अदर। पर्सनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स एंड थॉट्स। इमेजिनेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज यूज लैंग्वेज टू क्रिएट द वर्ld of imagination. Representation function of a language is using language to communicate. Heuristic function of a language is using language to learn and discover. What are the characteristics of a communicative approach? Characteristics of communicative approach are given below. Communicative approach emphasizes on communicative of a language because it plays an important part in development of a society and a human creator. The message or thought expressed in communicative are also in form of functions, so this approach is very useful. If this approach is used in classroom activity, then it will be very useful for learning because in many classes language is taught to pass examination only, so that approach enables students to develop communication ability, which is very important activity of life. Through communicative approach, the learner learns targeted language as he learns their mother tongue. It means that the atmosphere of English language is created so the student could learn English directly. Fifth, communicative approach enables student to learn language naturally because the environment of target language learn is created. All the teaching learner material are prepared according to the child attitude and interest of individual difference, so the child could learn easily and effectively the approach in the learning center. अब आपने देखा होगा जो हमारे इंग्लिश पढ़ाने वाले सर थे, एक ही सब बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाया जा रहा है, सब बच्चों को एक ही रूल पढ़ाए जा रहे हैं, सब बच्चों को एक ही जैसा कराए जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। हम जिस बच्चे को जितनी नीड है हम उतनी देंगे। अगर किसी बच्चे को हद से ज़्यादा आता है तो उसे थोड़ा सा देंगे तो उसे आ जाएगा, किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं आता तो उसे बेसिक से सिखाना पड़ेगा, ठीक है।
In the communicative approach, very everywhere in school, classroom, on stage, and seminars, we can say that the learn are taught as a native person learn his language. The student should be provided a real life situation, creativeness of a role play simulation projects should be produced in students so that they could connect these all with a real life situation. In communicative approach, the emphasis is on active mode of learning in given. Thus, it makes the students active in is their activities, including pair work and work group. In communicative approach, the emphasis on active mode of learning is given. Thus, it makes students active in their activities, including pair work and group work. In this approach, the visual aid are permitted. These aid help to provoke practical communication. They help to motivate and focus people's attention. The language is never static; it is dynamic. जैसे कि डायनामिक है, जैसे एजुकेशन बोल देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एडुकेशन बोलते हैं। डायनामिक है मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आई डोंट नो, लाइक आई डोंट नो, नो आई डिडंट नो, ऐसे भी बोलते हैं ना। तो डायनामिक है, चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है। This approach helps to learner to use language naturally and according to the acceptance from and usage. Okay, the active use of lexical items help learners to develop vocabulary. There should not be passive use of lexical items. They need active commands of using words in meaningful message. So, in this approach, the lexical items are taught in context. Question number 19. Describe the merits of communicating approach. So, merits of communicating approach are given below. Main function of communicating approach is to develop communication completeness, so they can provide with optimum opportunity to use the language. This approach creates communicative environment among leaders, teacher, and society. They are motivated to form the bridge of communication and to make use of real life language in the other world languages used. This approach is a child or learner centered, so it is very scientific. All the teacher materials are prepared according to the mental and interest of the students. In this approach, the modern methods are used, make teaching very effective and interesting. In this approach, every learner are active during teaching because there are interaction among learners and teachers. They communicate verbally and non-verbally to each other, so every student is active. This approach provides sufficient opportunity to students for practice of communication with other students or people. So now we are going to understand our 20th question. Okay, thrown light on active based learning, ABL method, active based learning method. Learning through activities is a new approach in a teaching of English language. Generally, teaching of English to non-English speaking people is a difficult task for time memorization, immemorable verbal attempts has been made to specify the process of teaching English to non-English speaking people. An earnest attempt has been made to teach English to the pupil of a school of Chennai Corporation through well-designed and developed cards and through a ladder by the Department of Education of the Corporation of Chennai and this assistance of UNICEF and profession support of selected DTERT and diet faculty. Learning involves listening, speaking, writing, and
reading and writing. This is something like supporting a huge structure on four pillars. The initial milestone in each standard is termed as zero milestone. These zero milestones are for making the children learn by learning. A minimum of 10 days can be spent to complete each million in each standard. The zero milestone is to the second standard is to revise with their have learning in their first standard. So आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडिंग इन लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि ज़रूरी होता है हमें। ठीक है, तब के तक के लिए बाय बाय।